Guys, and I welcome you all in today's general science practice question series. And yes, it is a NCRT based question series where you find all the questions, all the MCQs questions based on the syllabus in NCRT book, which is equally helpful in your NEET preparations, ANM, GNM, BSc nursing exams, MTS, CUT, RRB, and all the rest of competitive exams, which includes the syllabus of general science in it. So today we will solve the questions of this chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. And before moving further, we have a quotation for today, that is, you are the only one responsible for all your focus and all the distractions because you are a self tutor. So if you are studying and again तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्शन में बदल जा रहा है, ठीक है, और फिर उसका ब्लेम तुम किसी और पे बिल्कुल भी मत लगाओ, बिकॉज यू आर ओनली वन रिस्पॉन्सिबल. चाहे वो आपका फोकस हो, चाहे आपका डिस्ट्रैक्शन हो, दोनों आपसे शुरू होकर के आप पे ही ख़त्म होते हैं. तो इसीलिए become a self tutor. So now the next is, so this is the basically the name of the chapter. And now I have a request from all you that bring your focus please and please here only, because if you don't have the focus then you will not be able to even occupy or फिर acquire the knowledge that we are going to take here. So bring your focus completely in this session. Okay, now the first question is floriculture. Floriculture is the cultivation of flowers, fruits, grapes और honey. That is floriculture. ये क्या का cultivation को कहते हैं? तो यहाँ से फ्लोरी इज डिनोटिंग दैट कि ये फ्लावर्स का कल्टीवेशन होना चाहिए. दैट इज कि ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज inflorescence is seen in flowers, fruits, leaves और stem. inflorescence किस में देखने को मिलता है? तो basically inflorescence is seen in flowers. So यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. inflorescence basically means that कि the arrangement of petals, the beautiful arrangement of petals which gives a flower a beautiful or a attractive manner, that is known as inflorescence. So it is seen in flowers. Now the next question is gynosium refers to dash reproductive system. gynosium कौन सा reproductive system होता है? मेल, फीमेल, बोथ और नन. So gynosium. If we talk about plants, then it have two types of reproductive system. One is gynosium and the second one is androsium. And androsium refers to the male gamete. So here the answer will be gynosium will refer to the female gamete. That is option number 2 will be your correct answer. Now the next question is, in a typical stamen, the long stalk is known as filament stalk, anther or none. So stamen, what is stamen? Stamen, it is the male reproductive, it is a part of male reproductive system in plants, where जहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि जो लॉन्ग स्टॉक होता है, ठीक है, अगर स्टेमन की if we talk about a flower, then it looks like something that this is your petals. Okay, and यहाँ पे आपका from the middle a long filament comes out, okay, with something is structured like this, and rest of small filaments also comes out of it. Okay,
and here is a something structure like this. Okay, this is basically the female reproductive part. This black margined part is the female reproductive part, which is known as the pistil, and this blue one is the male reproductive part, that is known as the anther. Okay, oh, not anther but stamen. And a stamen has two parts in it. One is this long wire like structure or thread like structure, which is known as the filament here, and the other one is this lobed like structure, which is known as the anther part. So here the question is, in a typical stamen the long stalk is known as, the long stalk क्या कहलाता है? तो we have seen just now that this is known as the anther and the long stalk of the stamen is known as filament. So here your answer will be the filament. That is option number 1 will be your correct answer. Now the next question is, the part attached with the thalamus or petal of the flower is its proximal end. The answer will be your proximal end. That is, sorry, but the complete question will be the stamen part. The stamen part attached with the thalamus or petal of the flower is its, मतलब कि जो स्टेमन था जो कि अटैच्ड होता है पेटल से, वो उसका कौन सा एंड होता है? तो बेसिकली इट इज़ इट्स प्रॉक्सिमल एंड, दैट इज़ पास वाला एंड. एंड इफ वी आर, मतलब कि जो फिलामेंट पार्ट होता है दैट इज़ अटैच्ड विद द पेटल ना, दैट इज़, this is the proximal end, and where the anther is present this is known as its distal end, that is दूर वाला end. Now the next question is, anther is dithesis, bilobed, monothesis or both 1 and 2? So the answer will be both 1 and 2, that is both dithesis, it has 2 theca, okay, and it is also bilobed. That is option number 4 will be your correct. Now the next question is, pollen sacs is also known as megasporangia, microsporangia, sporogenous tissue or pollen mother cell. So basically pollen sacs is also known as its, that is the thala. Okay, pollen sacs is also known as what? It is also known as the microsporangia. This will be your correct answer, because megasporangia basically refers to the female reproductive related. Okay, and sporogenous tissue, it is located inside the microsporangia, it is not the microsporangia basically. And the pollen mother cell, it is basically which forms after the sporogenous tissue. Okay, so here the correct answer will be your second option. Now the next question is, microsporangia is surrounded by 3 layers, 4 layers, 5 layers or 2 layers? The correct answer will be your 4 layers, because it has basically 4 layers, which is the first one is your epidermis, then after your endothelium. Okay, endothelium, then comes your middle layers, and then after your last one is your tapetum. Okay, now the next so you can see the 4 layers of it. These are its 4 layers, that is, the first one is your epidermis. Okay, now then after your endothelium, see, this is your second layer, and third one is your middle layers, this one, and fourth one is your tapetum, the innermost layer. Okay, the fourth layer is your tapetum. Now
You can see here all the rest parts of the microsporangium, microsporangium. That this is your anther part. Okay. So here I will explain you all the basic terms related to this. That it has two lobes. One lobe is this. This is the first lobe. Okay, and this is your second lobe, like a butterfly wings. Okay, that's why it is known as bilobed, and it is because of the separation of this anther from here. This is also known as diathesis, that is having two body like structures. Okay, so it is also said to be diathesis. Now you have already learned the four layers of this anther, and now this is the next comes your sporogenous tissues, from where the pollen mother cell is developed and from where your microspores are generated. This is your connective tissue, and which connects to your filament or the long stalk part, that is the filament part of the stamen. And now we will see the next, that this image, this is basically your anther. Okay, the same anther. It is a view from microscope. These all are your pollen grains which are released in a mature anther. Okay, where the pollen grains are already dehiscence, that is are released out from the pollen mother cell. So now we will see the next question. The next question is the layer, not the lawyer, sorry, the layer. The layer which helps in dehiscence of pollen grains is that. What is the meaning of dehiscence? I just told you that is the release of pollen grains. The release of pollen grains is the, ऐसा कौन सा layer है which helps in the release of pollen grains? So it is your tapetum, that is the innermost layer. That is option number 2 will be your correct answer. Now the next question is, tapetum is uninucleated, binucleated, trinucleated और tetranucleated. मतलब कि जो टेपेटम होता है इनर मोस्ट लेयर, वो आपका बाई न्यूक्लिएट होता है, यूनी होता है, ट्राई होता है या फिर टेट्रा होता है, दैट इज 4 न्यूक्लिएटेड. तो here the options are not sufficient because tapetum basically has always more than one nucleus. सो उसके पास आपका बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है, मतलब 2 न्यूक्लियस भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर 4 या भी 5, इतना कितना भी हो सकता है, बट इट विल नेवर हैव 1 न्यूक्लियस इनसाइड इट. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रॉन्ग. एंड सो यहाँ पे क्वेश्चन, आई चेंज द क्वेश्चन, दैट इज tapetum lacks or tapetum doesn't have what? It uninucleus. It doesn't have a uninucleated body. Now the next question is, young anther has compactly arranged homogeneous tissues known as sporogenous tissue, microspores, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स. मतलब कि जो यंग एंथर होता है उसके पास कुछ कॉम्पैक्टली, मतलब बहुत ही टाइटली पैक्ड कुछ अरेंजमेंट होता है. तो कि बेसिकली क्या होता है, होमोजेनस टिश्यूज से कंपोज रहता है, मतलब कि नो अदर टिश्यूज, सेम टाइप ऑफ टिश्यूज आर कंपोज्ड देयर. सो उसको क्या कहते हैं? तो आंसर विल बी योर स्पोरोजेनस टिश्यूज. ओके, वैसे भी यहाँ पे टिश्यू लिखा हुआ तो इससे तो आंसर पता चल ही जा रहा है कि होमोजेनस टिश्यूज क्या होगा आपका, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज ही होगा. और फिर माइक्रोस्पोर्स तो आपका पॉलन ग्रेन्स होता है बेसिकली, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम तो होता है दैट इज़ द
वो वाला स्ट्रक्चर 4 जो होता है, एक लोब में दो दो होता है, दिस वन इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, सो ये वाला माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। पोलन ग्रेन्स, तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। And now the next question is, each microspore tetrad gives rise to nearly dash pollen grains. एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से कितने pollen grains रिलीज होते हैं? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड पूछ रहा है। माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब कि चारों जो आपका ये पॉलन मदर सेल था या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम था, उन चारों से मिला करके एक आंथर में से आपका कितना पॉलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर्स रिलीज होता है। तो अगर एक का पूछता, अगर ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम का पूछता, तो इट विल हैव बेसिकली 100 to 1000 पॉलन ग्रेन्स वंस। एक बार में आपका 100 से 1000 तक का माइक्रोस्पोर्स रिलीज होता है। और तो वहीं अगर ये चारों का पूछ रहा है तो चारों का कितना हो जाएगा? चारों का हो जाएगा 4 into 1000, दैट इज 4000। एक बार में 4000 pollen grains। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4000। क्योंकि यहाँ पे टेट्राड पूछा, टेट्राड मीन्स चारों का। Now the next question is, the yellow powdery substance in hibiscus flower is its petal color, pollen grains color, stamen color or pistil color? Not the pistil, it is basically pistil color, that is female reproductive part. So from where the yellow powdery substance comes? This is the question and the answer will be your pollen grains. Basically it is sticky in nature, so it also has a yellow powdery like substance which shreds which comes from the color of the pollen grains, which are shed over the stigma of the pistil and which goes on further for the process of pollination. Now the next question is, diameter of a typical pollen grain is 20 to 25 micrometers, 15 to 20 micrometers or 10 to 15 micrometer or none of these. तो here it is asking कि अगर एक pollen grain है तो उसका जो diameter है, बीचों बीच का जो distance है, वो कितना मेज़र करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25 माइक्रोमीटर। ओके, दिस इज़ अ मेजर्ड वन। और इसका सॉरी 20 से 25 नहीं था, नॉट लाइक दैट। द आंसर विल बी योर नन ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ से कोई भी करेक्ट नहीं है। बेसिकली जो उसका डायमीटर होता है वो आपका 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। सो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। Now the next question is, the most resistant organic material known in the earth is sporopollenin, exine, intine और germ pores। तो ये जो चारों है ये आपका बात कर रहा है माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर का जो लेयर्स होता है, इट इज़ बेसिकली बाई लेयर्ड, जिसका जो अंदर वाला लेयर होता है इट इज़ नोन एज इंटाइन एंड उसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है आउटर लेयर, दैट इज़ नोन एज एक्साइन। और जो ये एक्साइन पोर्शन होता है, ये आपका जो इसका जो सेल्स होता है वो आपका बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, जो कि मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। दैट इज़ कि उसको ऐसा कोई भी एंजाइम या फिर ऐसा कोई भी बैक्टीरिया या फिर बोल लीजिए वायरसेस एंजाइम्स या फिर बैक्टीरिया, कुछ भी अभी तक ऐसा मिला नहीं है जो कि इसको डिग्रेडेड कर सके। दैट इज़ इट इज़ नॉन डिग्रेडेबल। अभी तक तो इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड दैट विच कैन डिग्रेडेड दिस स्पोरोपोलेनिन। तो इट is the most resistant organic material known in the earth till now. So the answer will be sporopollenin. And talking about the germ pores, this is nothing but the pores present in
a very little gap in the pollen grain from where it can germinate for the process of pollination in the stigma. Now the next question is, what is correct regarding sporopollenin? Only few degrading enzymes are found. No degrading enzymes are found yet. Only one single degrading enzyme is found. Many degrading enzymes are found. यहाँ पे basically it is talking about the sporopollenin, that is the most resistant organic material, and just now I have told that till now no degrading enzymes are found yet. So the answer 2 will be your correct answer. Now the next question is, sporopollenin is absent in the apertures known as. sporopollenin कहाँ पे absent रहता है? In the microspore. माइक्रोस्पोर का ऐसा जगह जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एग्जैक्टली प्रेजेंट ही नहीं रहता है, तो इट इज़ नोन एज योर जर्म पोर्स फ्रॉम वेयर इट कैन जर्मिनेट. Okay, now the next question is, intine is made up of cellulose, pectin, both 1 and 2 or none. So the answer will be 3, that is both 1 and 2, because intine, the जैसे कि हम लोग देखें कि जो एग्जाइन था इट इज़ मेड अप ऑफ योर स्पोरोपोलेनिन. ठीक उसी तरीके से जो इंटाइन होता है, जो इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ योर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉल सेल फ्लोटिंग ऑन द लार्जर सेल इज नोन एज. सो हेयर इट इज ऑल्सो talking about your microspore or the pollen grain. Okay, दैट वहाँ पे जो स्मॉल सेल रहता है फ्लोट जो करते रहता है लार्जर सेल में. I just draw it. This is your largest cell and a floating cell will be like this. It is its nucleus and the larger cell has this nucleus. I just redraw it. Okay. This is your smaller cell and this is your larger cell. Okay. So यहाँ पे पूछ रहा है जो स्मॉल सेल था जो कि फ्लोट कर रहा था, ये वाला ब्लू कलर वाला, ऑन द लार्जर सेल, दैट इज़ लार्जर सेल आपका रेड कलर वाला. तो वो क्या था, जो छोटा सेल था वो क्या कहलाता, इज़ नोन एज व्हाट. तो दिस इज़ नोन एज योर जेनरेटिव सेल. बेसिकली इट इज़ अ स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर और स्पिंडल शेप्ड सेल which is known as your generative cell from where. और ये जो जनरेटिव सेल होता है यही वो सेल होता है दैट की डिवाइड करके माइटोसिस से डिवाइड करके आपके बाद में जाकर के 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so just look at this picture. This is the picture which I have just drawn there. Okay, this is your pollen grain, this is your exine, intine. Now and this is your nucleus. Okay, now see, this is your vacuoles, this is the nucleus. Just look at this. So you can see here that this is a spindle shaped structure. Okay, and this is your, see, asymmetric spindle. This is your generative cell which gives further generative cell, and this the bigger one. Okay, the bigger one is your vegetative cell which has a irregular nucleus. This has a regular nucleus and this has a irregular nucleus. तो पूरी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका
स्पिंडल शेप्ड वाला स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्पिंडल शेप्ड वाला स्ट्रक्चर होता है वो आपका जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल होता है जिससे कि आपका मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। एंड जो बड़ा वाला होता है, ओके, दैट इज़ योर वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब कि इसके पास फूड रिजर्व्स रहता है। फूड रिजर्व्स होता है जिससे कि ये फर्दर जो डिवीजन्स होता है उसमें ये रोल प्ले करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज spindle shaped. Spindle shaped cell is present in generative cell, vegetative cell, both or none of these. तो अभी we have seen that generative cell में present होता है spindle shaped cells. Okay, now the next question is in over -% of angiosperms the pollen grains are said in two-celled stage. मतलब कि कितने परसेंटेज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, अगर लेट अस टेक 100%, तो इसमें इतने प्रतिशत में कितने प्रतिशत एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो 2-celled स्टेज, दैट इज़ कि जनरेटिव प्लस आपका वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चर में ही झड़ जाता है। और फिर कुछ जो होता है और जो रेस्ट होता है उसमें 3-celled स्टेज में ये फर्दर प्रोसीड करता है। दैट इज़ एक तो आपका वेजिटेटिव सेल एंड जो ये जनरेटिव सेल दैट गिव्स 2 मेल गैमेट्स। ओके, उस सेल्ड स्टेज में ये झड़ता है। तो दिस इज बेसिकली आस्किंग कि कितने प्रतिशत आपका 2-celled स्टेज में झड़ता है, दैट इज जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, नॉट 2 मेल गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी योर 60%. दिस इज अ line from your NCERT book, and I just repeat again and again that NCERT lines and NCERT syllabus is the backbone of all your competitive general science, general biology or general physics or general chemistry questions. Okay, so just keep in mind that we should revise it daily. So here the answer will be your option number 1, that is 60% एंजियोस्पर्म्स में आपका जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आपका 2-celled स्टेज में ही झड़ जाता है एंड रेस्ट जो आपका 40% होता है वहाँ पे आपका 3-celled स्टेज में वो प्रोसीड करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलर्जिक पॉलन ग्रेन स्पेसिस इम्पोर्टेड विथ व्हीट। कौन सा ऐसा एलर्जिक पॉलन ग्रेन स्पेसिस था जो कि इम्पोर्ट किया गया था इंडिया में। बेसिकली यहाँ ये किसकी बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडिया। इंडिया में इम्पोर्ट किया गया था, मतलब इम्पोर्टेड हुआ था इंडिया में। तो कौन सा वो, मतलब वीट के साथ इम्पोर्टेड किया गया था। तो बेसिकली द आंसर विल बी योर कैरेट ग्रास। व्हाट, कैरेट ग्रास। एंड उसका जो साइंटिफिक नेम था वो था आपका पार्थेनियम। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, पार्थेनियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज pollen tablets and syrups are generally used nowadays by athletes, race horses, both 1 and 2, or dietitians. The pollen tablets and syrups are basically आज के दिनों में किसके द्वारा यूज किया जाता है। तो द आंसर विल बी योर बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। both athletes and race horses to increase their what, energy। मतलब कि जब खेल रहे होते या फिर रेस में दौड़ रहे होते तो अचानक से अगर पॉलन टैबलेट्स को वो डाइट में लेते हैं तो इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी, और यू कैन से मतलब देयर परफॉर्मेंस। ओके, ऑप्शन नंबर 3 correct answer. Now the next question is pollen grains maintaining viability for months belongs to Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae और all। तो बेसिकली अगर जब एक बार जो pollen grains शेड हो जाते हैं, ठीक है, pollen grains आंतर से निकल करके डेहिशंस होकर के वो शेड हो जाते हैं एक बार, तो उनका जो वियाबिलिटी होता है वो
जो अगर देखा जाए ज़्यादातर प्लांट्स की बात करें तो उसमें केवल 30 मिनट्स के अंदर वो क्या हो जाता है, 30 मिनट्स के अंदर उसका जो वियाबिलिटी होता है वो आपका फिनिश हो जाता है। वो उसके बाद वो मतलब वो काम नहीं आने वाला है। ओके, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट नाउ इफ़ इट एक्सीड्स इट्स 30 मिनट्स लिमिट। बट वहीं अगर कोई कोई स्पेसिस जो होता है प्लांट स्पेसिस वो उसको मेंटेन कर पाते हैं फॉर मंथ्स, मतलब कुछ महीनों तक के लिए वो मेंटेन कर पाते हैं। तो ये कौन सा आपका स्पेसिस होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल, दैट इज सोलानेसी, द पोटैटो फैमिली, द लेग्यूमिनासी जो हो गए आपका लेग्यूमे फैमिली, पल्सेस हो गए, ओके, एंड रोजासी, the rose family. Now the next question is, pollen grains are stored for years in liquid dash in temperature of dash degree Celsius. So here we have to fill two, one option, one answer here and the next answer here. तो यहाँ पे दो डैशेस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो pollen grains होता है आर stored for years in liquid, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। लिक्विड नाइट्रोजन में या फिर लिक्विड ऑक्सीजन में या फिर लिक्विड हीलियम में स्टोर किया जाता है। वो भी ये भी पूछ रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस में, वो -196 डिग्री सेल्सियस और 196 प्लस 196 डिग्री सेल्सियस और प्लस 195 डिग्री सेल्सियस। सो the answer will be your liquid nitrogen in -196 degrees Celsius. That is option number 2 is your correct answer. Now the next question is, rice loses its pollen viability after dash minutes of release. So अभी आई जस्ट टोल्ड दैट कि बहुत सारे जो स्पेसेस होते हैं वो 30 मिनट्स के अंदर ही अपना वियाबिलिटी पोलन ग्रेन्स का लूज़ कर देते हैं। So here also the answer will be your option number 1. That is your correct answer. Now the next is, the multicellular stage fused together is known as, multicellular not, the multicarpellary stage fused together is known as Synocarpus, Apocarpus, both or none. तो कार्पल्स, पहली बात ये पूछ रहा है कि मल्टी कार्पलरी मतलब कि एक कार्पल नहीं, ढेर सारे कार्पल्स। ओके, तो यहाँ पे कार्पल होते क्या है, तो जैसे कि स्टेमन होते हैं। स्टेमन क्या होते हैं? स्टेमन दे आर बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, वैसे ही कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। This is the red threads like structure, this is your carpels, and this yellow portion, okay, this long yellow portion is basically your मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे रेड जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड नहीं, रेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बारे में दिस इज आस्किंग, दैट इज़ कि मल्टी कार्पलरी स्टेज फ्यूज्ड टुगेदर। यहाँ पे तो जो कार्पल्स हैं दे आर सेपरेटेड टुगेदर। ओके, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, दे आर सेपरेटेड। ओके, इफ दे विल बी फ्यूज्ड टुगेदर एंड टुगेदर दे विल स्टैंड लाइक दिस। ओके, अगर ये फ्यूज किए हुए हैं एक साथ, मतलब कि एक साथ रैप अप किए हुए हैं, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोकार्पस बोलते हैं, या फिर एपो, या फिर बोथ, या फिर नन। सो हियर द आंसर विल बी योर Synocarpus. Okay, and what about if they are unfused? अगर वो unfused है तो उसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। ओके, now the next question is, the landing platform for the pollen grains is stigma, style, ovary or none. So before that we should know the different parts of the pistil, that is the female reproductive part. तो मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं, बस just as a rough I will tell you that if this is your female reproductive part, where this is your ovary part. Okay, this is your ovary part, and this is your style, and this is your stigma, or you can say this is your stigma. तो जो pollen grains होता है, ओके, जो यहाँ से स्टेमन, दिस इज योर स्टेमन,
आई एम मेकिंग दिस एज योर स्टेमन, दिस ब्लू कलर्ड। अगर ये स्टेमन है, यहाँ से तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स जो गिरता है, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे गिरेगा? तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इट विल फॉल ओवर योर स्टिग्मा पार्ट। ओके, हेयर ओवर योर स्टिग्मा। ओके, यहाँ पे गिरेगा स्टिग्मा में। वो स्टाइल में तो पहुँच ही नहीं पाएगा, वो स्टिग्मा आपका सारा कैच कर लेता है एंड देयर आफ्टर वहाँ से आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हेयर द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 1। ओके, स्टिग्मा। Now the next question is the basal bulged part of the pistil is known as what? Ovary, stigma, style or filament? Filament तो होगा नहीं, because filament is your the part of your anther. ये filament आपका anther का part होता है. Style तो the middle part. Stigma, this is your upper part and this is not at all bulge. Okay, bulged means क्या? फुला हुआ पार्ट. तो फुला हुआ पार्ट कहाँ पे रहता है? आपका लोअर पोर्शन में. दैट इज नोन एज योर ओवरी. ओके, सो द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 1. Okay, that is option number 1 will be your correct answer. Now the next question is the plant with placentation of only one ovules. तो ऐसा प्लांट जिसका ओवरी में जो प्लासेंटा बनता है वहाँ पे केवल एक ही ओव्यूल रहता है. ओके, नॉट मोर देन 1. तो ऐसा कौन सा प्लांट होगा? इज इट मैंगो, पैडी और वीट और ऑल? पैडी रिफर्स टू राइस. ओके, तो if you are doubting or if you have confusions, then you can just imagine the fruits. Okay, the fruits of that plant, that then you will know the number of the ovules. जैसे कि अगर हम लोग राइस की बात करें तो राइस में वहाँ पे ढेर सारे धान निकलते हैं. ओके, अगर एक पौधे में देखें तो ढेर सारे धान निकलते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज इट हैज़ अ मल्टी ओव्यूल. मल्टी मतलब ढेर सारे ओव्यूल है उसके पास. वैसे वीट के भी केस में ढेर सारे होते हैं. और वहीं अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो इट जस्ट हैज़ अ सिंगल सीड और यू कैन से जस्ट हैज़ अ सिंगल मैंगो. सो इट इज़ बेसिकली अ one ovulated plant. So the answer will be your mango. Now the next question is the ovules attaches with the placenta by means of a stalk known as funicle, hilum, micropyle or integument. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दैट इज जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल अटैचेस विद द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक. एक जो स्टॉक होता है वो प्लासेंटा से अटैच होता है. Now just take this is your ovary, then this is your placenta and this is your ovule part. Okay, that is the seed which मतलब fertilization के बाद seed बनता है. तो this is your ovule part. तो ये पूछ रहा है कि ये जो ovule रहता है, okay, this ovule is connected with the placenta बाय द मीन्स ऑफ स्टॉकिंग. जो स्टॉक होता है उसके द्वारा ये कनेक्टेड रहता है. तो उस स्टॉक को आखिर कहते क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका. तो द आंसर विल बी योर फ्यूनिकल. ओके, इट इज़ बेसिकली अटैच्ड विद द फ्यूनिकल स्टॉक. Now the next question is the lower end is known as micropyle, chalice, hilum, nucellus. तो यहाँ पे क्वेश्चन आई हैव जस्ट केप्ट अनकम्प्लीटेड बिकॉज यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम में भी इट इज़ समटाइम्स लुक्स ट्रिकी एंड एग्ज़ाम में ट्रिक करता ही करता है. तो दैट्स वाई आई हैव जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई हैव जस्ट kept this question uncompleted just like the questions in the competitive exams. So now यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द लोअर एंड इज नोन एज. तो किसका लोअर एंड? तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है आपका वो एम्ब्रायो सैक का. ओके, तो उसका जो लोअर एंड होता है उसको क्या कहते हैं? तो लोअर एंड
तो उसका जो एंड रहता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, जहाँ पे आपका जो ऊपर वाला होता है उसको माइक्रोपाइलर कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड। और जो नीचे वाला होता है उसको चैलेजल एंड कहते हैं, चैलेजल एंड कहते हैं। ओके, तो आंसर तो मिल गया होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have just reached 40 questions, and यहाँ पे because this chapter has so many questions, so I have split it in this video in 2 parts. So here the first part is completed, and now I just want to end this video. So bye bye guys, and I would like to thank you all my friends from the depth of my heart, and please I request you all to please comment below that how this video is going to help you and this all. So bye bye, and we will meet soon in the second part of this video. So thank you so much.